Yeah, good evening, participants. So, we are sorry to start this webinar with a delay of 2 minutes. So today's webinar is, on learning to trade index on an intraday basis. So we will start this webinar without any further delay. Yeah. So, so in this webinar, what we are going to discuss is, okay, before we start, I would like to ask you all a question. Shall we do this webinar in Hindi language or English language will do to all? Okay, so yeah, I've gotten a lot of response. So it is an Hindi and English both. So ठीक है, I will use a mixed language. I will use English as well as Hindi. दोनों language का use करते हैं हम. Alright, तो इस webinar में हम लोग क्या discuss करने वाले हैं? Webinar में we'll discuss about the advantages of trading index intraday. ओके तो इंडेक्स जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया. सो दीज आर टू वेल नोन इंडेक्सेस एंड हाईली volatile and liquid indexes which we can trade and also we learn कि हम लोग इसके अंदर रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि व्हाट चार्ट्स एंड टाइम फ्रेम्स शुड बी यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. ओके विथ लॉजिक्स, मतलब लॉजिक के साथ देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए बेटर. तो तो विल गो अहेड विथ इट. So as we all know that Nifty futures and options plus Bank Nifty futures and options are highly liquid indexes available for trading. तो निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और उनके ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ही हाईली लिक्विड है. ओके, फॉर ट्रेडिंग. हाईली लिक्विड इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लिक्विड मतलब आप जो रेट चल रहा होता है उस रेट पे आप जाके ट्रेड कर सकते हैं. जो बिड और ऑफर है, लाइक whenever you want to trade you can look at the bid price and the offerer price uh, in the stock that you are trading. तो उसके अंदर अगर बिड और ऑफर के बीच में अगर आपको ज्यादा ही डिफरेंस मिलता है ऑफ अराउंड 0.2% और 0.5%, और कभी कभी तो इलिक्विड काउंटर्स में हमें 1% का भी गैप दिखता है बिड ऑफर प्राइसेस में. तो जहां पर गैप ज्यादा होता है वहां पर ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मुश्किल मतलब क्या? आपको दिख रहा है कि वो स्टॉक 100 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो ऑफर बेचने के लिए खड़ा है वो 101 पर बेच रहा है. तो जब आप उसको जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो वो आपको 101 पे मिलेगा, राइट? तो तो इसका मतलब आपका 1% तो वैसे ही वहां पर चला गया. तो लिक्विड काउंटर का मतलब ये होता है कि जो रेट चल रहा है आपको उसी रेट पर वो स्टॉक मिल जा रहा है. राइट, सो what do we understand by liquid? Liquid is like we always have to check the difference between the bid price and the offerer price for the stock that you are trading. So that gap should not be much. It should be well within 0.2% or 0.1%. So if you look at that gap in index futures or options like Nifty futures and options or Bank Nifty futures and options, that gap is very minimum. Okay, that is why you can trade it right then and there without any high slippages. मतलब आपको slippage ज्यादा नहीं लगेगा. जो रेट पर आपको चाहिए है बाय करना या सेल करना, यू विल गेट दैट. ओके, सी राइट नाउ ये मैं आपको ट्रेडिंग स्क्रीन पर बता भी देता,
but right now market is not on, so the bid prices and the offer prices would not be available at this point in time. So you can look at the bid prices and offer prices tomorrow when during market hours. All right. All right. So let us now understand this. I hope now we have understood what do we mean by liquid. So you should always look for liquid stocks to trade if you are a trader. Okay. So in Nifty 50 basket, there are 50 stocks, which are highly liquid. So they have kept that index in such a way कि Nifty 50 में आपको 50 के 50 stocks जो मिलेंगे वो बहुत ही लिक्विड है, मतलब आप ट्रेड करना चाहोगे तो उसके अंदर ट्रेड हो जाएगा, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा. सो यू कैन प्रेफरेबली look to trade in Nifty 50 basket or in Nifty and Bank Nifty futures or options. Okay, so let us go ahead. So we were talking about trading only highly liquid counters. तो जहां पर हम we were also talking about Nifty and Bank Nifty to be highly liquid. और क्या-क्या फीचर्स हैं ये ट्रेडिंग ये इंडेक्स ट्रेडिंग के. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉलेटाइल बहुत कम होते हैं. Now, what do we mean by volatile? Volatile is the fluctuation that happens during the day. कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है. All right, but okay. Before, I mean, up till March 2020, March 2020 तक, March 2020 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी वोलेटिलिटी नहीं थी. Okay, I mean they used to move with the bank Nifty used to move 200 points up or down, and Nifty used to move only 50 to 100 points up or down, right? लेकिन मार्च 2020 के बाद हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी काफी वोलेटाइल हो गए हैं. लेकिन इफ यू कंपेयर इट विथ इंडिविजुअल स्टॉक्स, अगर अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टिल they are less volatile. Okay, but comparatively looking at the the coronavirus fears and other economic factors, volatility भी काफी ज्यादा है. पर what I'm saying is, if you are comparing Nifty and Bank Nifty movement with the movement of stocks, they are still less volatile. Okay, तो लेस वोलेटाइल होने के कारण आपको जो उसमें ट्रेंड देखने को मिलता है वो थोड़ा स्मूथ देखने को मिलता है. ऑलराइट. और अभी लाइक इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देयर आर वीकली ऑप्शंस अवेलेबल. सो वीकली ऑप्शंस में लाइक यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय चीप ऑप्शंस. तो मतलब इस during times of volatility, a buying option is a good way, where you can earn good amount of money into this. So weekly options are very good and they are highly liquid as well. आपको मतलब उसके अंदर काफी ट्रेड होते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में. Alright. See, there would be some questions out here which I may not be able to answer because I'm getting too many questions. So let us take this question answers after I finish this webinar. So as of now, you can just focus on what I'm saying, and in case if you have any questions, write it down on a piece of paper so that you can ask me once we are done with it. Okay. So let us go ahead. Now निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ये फ्यूचर्स में हम ट्रेड करते हैं और उसके ऑप्शंस भी हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर लाइक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. सो as far as derivatives are concerned, derivatives में ज्यादा करके ओपन इंटरेस्ट का महत्व ज्यादा है. there is a lot of significance of open interest. Okay, so
So in this, what do we mean by open interest? If I give you a simple description, simple definition of open interest is the number of contracts. Open interest is the number of contracts that are outstanding in the market, which is not yet squared off. Okay, so open interest has a value. Whenever you look at the market watch, जब आप एंजल ब्रोकिंग का ऐप देखेंगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको एक ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू मिलेगा. यू विल गेट द ओपन इंटरेस्ट फिगर आउट देयर. So what is that figure? That figure is the number of contracts that are not yet squared off. Okay, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, लोगों ने ले रखी है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है. So open interest are the number of contracts which are outstanding in the market that is not yet squared off. All right. जब वो square off होता है, then the open interest value decreases. So this open interest value is normally read with the price moving up or down. तो ओपन इंटरेस्ट को ज्यादा करके प्राइस के साथ रिलेट करके हम देखते हैं, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन वेदर द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, or it's gonna remain sideways, or there is a short happening, or there is short covering happening. So based on this reading we come to that conclusion. तो जैसे कि आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, in this table you have price, volume and open interest. Let us now read this open interest figures. So when open interest rises, when the open interest is rising and the price is rising, at that time we say that the market is strong. Now why would open interest rise? Open interest would rise जब लोग contracts ले रहे हैं. It can be a sell contract or it can be a long contract. वो short भी ले सकते हैं और long भी कर सकते हैं. So when people are taking the contracts and holding it, the open interest will rise. Okay, but when you relate it with price, जब उसको हम price के साथ relate करते हैं तो price में क्या हो रहा है? Price बढ़ रहा है. Now when will the price rise? The price will rise when there is a buying coming in the stock, right? So जब कोई demand आया है price में, stock में, तो लोग फटाफट उसको बाय करते हैं और बाय करने की वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है. So when the open interest is rising, it means people are taking the contracts and holding it. But which side they are holding it? They are holding it on the price rising side. The price is rising. So price is rising. If the price is rising, we can understand that the people are buying a long contracts, and that is why even open interest is also rising. I hope I am audible to everyone and my voice is clear, or is there any disturbances? Okay. All right, so it is clear to everyone. Okay. There are some people who are not able to hear me. I would request to check the internet connectivity. All right. So if the open interest is rising, along with that, even the price is rising, we say that the market is strong. It means the long contracts are getting built up. And in other words, in derivative terms, we say that it is long built up which is happening. Okay, so long built up means the open interest is rising and price is also rising. तो डेरिवेटिव्स में जो हम लोग लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं, लॉन्ग बिल्टअप कब बोलते हैं? जब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स लोग खरीद रहे हैं. जब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो उसको हम लोग लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं. नाउ इफ यू जस्ट रिवर्स इट, if you look at the last column, if you look at the last row says the price is falling and open interest is also falling. So it is exactly reverse of the first one. It is exactly reverse of the long built up. So when the open interest falls, it means that people are squaring off the position and the price is falling. So whatever long people had taken,
they are squaring off their long position. So when the open interest falls and the price is also falls, it means that it is a long unwinding which is happening. Okay, so long unwinding means they are people are squaring off their long position. तो अगर फर्स्ट रो जो है ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, उसका अगर हम उल्टा करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट फॉल होगा और प्राइस भी फॉल हो रहा है. तो प्राइस क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि लोग बेच रहे हैं. अब क्या बेच रहे हैं? ओपन इंटरेस्ट कल तक बढ़ा हुआ था, लेकिन आज वो आज ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है. ओपन इंटरेस्ट नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि लोगों ने जो लिया हुआ है वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, सेल कर रहे हैं. तो सेल करने की वजह से प्राइस नीचे गिर रहा है. तो व्हेन ओपन इंटरेस्ट फॉल्स एंड द प्राइस आल्सो फॉल्स, इट मींस इट इज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द मार्केट. ऑलराइट, सो अभी मैं बीच में एक और कॉलम है वॉल्यूम का. नाउ if you see volume also to be supporting the fall or supporting the rise, it means there has to be a volume rise. If the volume rises, then it is a strong indication that it's gonna go up. Okay, when open interest is rising and price is rising. And when open interest is falling and the price is also falling, along with that, if you see the volume to be increasing, then it is a long unwinding is happening, but probably a short also is getting built up in that. Okay, so now let us see the third column, which says the open interest is rising and the price is falling. So when open interest rises, it means people are taking the position. Okay, in which side the people are taking the position? People are taking the position on the negative side. They are selling the contracts. So when they are selling the contracts, the price is falling. So when the open interest rises and the price falls, it means the market is weak. So it is a short built up that is happening. All right, now if the short built up is happening and there is a volume also to support that, then it means it is a confirmation that this short can stay for a little time, right? So volume is just a supporting indicator. Okay, so open interest and price together is telling you the trend of the market, and if the volume is also supporting it, okay, then nothing like it, then it is a confirmation to you on that side. So I will repeat again, एक बार फिर से repeat करता हूँ. अगर open interest बढ़ रहा है और price fall हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर short built up हो रहा है. उसी का ठीक उल्टा अगर करेंगे जो सेकेंड रो में है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है मतलब पीपल आर स्क्वायरिंग ऑफ देयर पोजीशन. But in which side they are squaring of the position? They are actually squaring of their short position, due to which the price is rising upwards. Okay, so when the open interest falls and the price rises, it is short covering which is happening. All right, so these are the interpretation based on open interest and price values. Okay, so I'll say that again. Open interest rise with price rise, it is a long built up, and the reverse of it, open interest falls with price fall, it is long unwinding. Open interest rise with price fall, it is a short built up, and open interest fall with price rise is a short covering. All right, so this is the open interest interpretation with price. Okay, let us go ahead. Now there are a few things. There are a few things which you can do to manage your risk. Like we have a protective call and protective put strategy. Now, see, when you buy a futures or when you sell a futures, okay, you have a direction in mind. So if you are thinking that Nifty is going to go up, you will actually buy a futures at that point of time. But if you don't hedge it, then what will happen? You have an overnight risk that in case tomorrow if some news come and there is a gap down which happens,
Nifty falls by 300 to 400 points, then you can't manage that trade and there will be a big loss, right? That scenario is rare, but still, okay, it may happen. Okay, so in that case, what we suggest, to have your position in futures hedged with the help of options. Okay, so if you have bought a call, you can buy a put. If you have bought a call, sorry, if you have bought a futures at let's say 10,000 level, तो उस टाइम पे आप एक पुट भी खरीद के रखो, so that next day if market gaps down, then your put will protect your losses to some extent. Okay, तो हम यहाँ पर रिस्क मैनेज करने की बात कर रहे हैं. रिस्क मैनेज मतलब अगर आपने फ्यूचर्स में पोजीशन लेके रखा हुआ है, तो आपको रिस्क ये है कि कल के दिन अगर रिवर्स साइड में गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो क्या. तो अगर गैप अप गैप डाउन से बचना है तो हमें अपने फ्यूचर के पोजीशन को हेज करके रखना पड़ेगा, राइट. सो हेज करके रखने का मतलब ये होता है कि आपने अगर निफ्टी फ्यूचर्स बाय कर रखा है एट 10,000 लेवल एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी 10,500 जाएगा, लेकिन कल के दिन वो नीचे भी आ सकता है, तो आप क्या करते हैं कि 9,900 का या 9,950 का एक पुट भी बाय करके रख देते हैं. तो जस्ट इन केस अगर कल को मार्केट नीचे आएगा तो पुट आपका पैसा देगा, फ्यूचर्स में आपको लॉस होगा. देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. योर मेन सोर्स ऑफ इनकम इन फ्यूचर ट्रेडिंग इज the direction in whichever side you're buying. So if you are doing a long futures, then your main income is from that long futures if it goes up, right? But if you are hedging it, then you're buying a put. So if you're buying a put to cover your losses, it means you're just protecting it from adverse loss, right? So I'll give you an example again. Assume that Nifty is at 10,300 today, and you think that the market is going to go up. Tomorrow is the expiry, so tomorrow we would see a jump of 200 points on the upside, right? So you have bought Nifty futures at 10,300 today. Now tomorrow, if there is a news in the morning due to which the Nifty gaps down by 200 points, so you would lose. I mean, you were expecting Nifty to go up by 200 points, but it fell down by 200 points, right? So in that scenario, considering this scenario, what you can do, you can buy a 10,200 put. So what you're doing, by buying 10,200 put tomorrow, if Nifty gaps down by 200 points, your 100 points will be fully covered by the put that you have bought, and 100 points would still be in loss. Okay, you will only be in a loss of 100 points, not more, even if Nifty gaps down by 300 points or 400 points. But you will still be in loss because your main source of income was from doing long futures, right? Just to protect your losses, you have bought a put on the downside. Okay, so this is one type of a hedging. The other type of a hedging is you have bought a futures and you have placed a stop loss. So again, placing a stop loss would happen only during market hours. तो आपको तो कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है 300-400 पॉइंट से, तो कुछ मतलब ही नहीं है स्टॉप लॉस का. ओके, so it is better that I mean you can have your stop loss placed during your intraday trading, so that is not a problem at all. But if you're taking an overnight position, it is always better to hedge your strategy by buying a call if you have short futures and buying a put if you have long futures. तो अगर आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया है तो कॉल बाय करके उसको हेज कर लीजिए, just to prevent a gap up. और अगर आपने फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा है तो आपको पुट बाय करना चाहिए, just to protect it from a gap down next day. All right.
And if you're doing intraday trading and buying futures or selling futures, then you can always prefer to place your stop losses. Just one thing I would like to let you know, that gap down and gap up scenarios are rare, okay? But during volatile session like we have been witnessing for the last 3 to 4 months, it is always better to keep your future position hedged with the help of options rather than placing a stop loss in the system for overnight positions. Okay, so the fourth option was buy naked options as indexes signals a buy or sell. So दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस को अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं बेस्ड ऑन द सिग्नल्स दैट यू आर गेटिंग ऑन इंडेक्स चार्ट। तो निफ्टी में जब आपको सिग्नल मिलता है तो आप ऑप्शन बाय करके चलो या सेल करके चलो। अगर निफ्टी में आपको सेल सिग्नल मिलता है तो आप मतलब ऑप्शंस में बाय सेल करके चल सकते हैं। सो ऑप्शंस इज अनदर मीडियम वेयर you can have a position where you can have a limited risk and unlimited profit kind of a strategy placed. Okay, so you all will get this recording to watch again. So after this webinar is over, you will get this recording on your email also. Okay, so let us move forward. Now, what time frame should we use? Okay, if we are doing intraday, then so like we have 60 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes time frame, 1 minute time frame to choose for trading. लेकिन कौन सा time frame better होता है? Now this analysis we have done कि हमने कुछ strategies लगाई थी, मतलब we did some strategies on different time frames for Nifty and Bank Nifty. So on 3 minutes time frame, when we looked at, we saw that there the commissions, the transaction cost and everything was more rather than the profitability. मतलब प्रॉफिटेबिलिटी लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत कम आ रही थी और ज्यादा जो कॉस्ट लग रहा था वो ब्रोकरेज में, कमीशंस में, ट्रांजैक्शंस में, इसमें बहुत सारा कॉस्ट लग रहा था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट वी वर गेटिंग इन 3 मिनट्स was on a higher side. So if you choose a lower time frame, the number of trades will increase. If number of trade increases, your transaction cost, brokerages cost, your commissions, everything will increase. So it will not pay you off well in terms of profitability, right? So this thing you have to understand. Now as we increased our time frame, जैसे हम 3 मिनट से 5 मिनट पर आए तो हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो कम हो गया। जो 3 मिनट में हमें 100 ट्रेड मिल रहे थे वो 5 मिनट में हमने देखा तो हमें उसमें 75 ट्रेड्स मिल रहे हैं और जब 75 ट्रेड्स मिले तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई when we compared it with 3 minutes chart. Okay, तो हमने देखा कि चलो 5 मिनट्स बेटर है। फिर जब हमने 15 मिनट्स पे देखा तो 15 मिनट्स में द ट्रेड रिड्यूस्ड इवन मोर। तो जहां पर 3 मिनट्स में 100 ट्रेड था और 5 मिनट्स में 75 ट्रेड था, वहां पर 15 मिनट्स में we were getting around 40 to 50 trades, right? So 40 to 50 trades मिला तो automatically your transaction cost, commissions, brokerage and everything came down. Even the profitability increased. So as and when we increased our time frame from 3 minute, 5 minute to 15 minutes, our profitability increased and the cost reduced. Okay, so it was the reduction in the cost due to which the profitability increased. Okay, then we came up to 30 minutes. 30 minutes में क्या हो रहा था? The trade were even less. Okay, जहां पर 40 trades हमें 15 minutes पे मिल रहा था, 30 minutes में we got only 25 trades to बस उतने ही ट्रेड मिले। लेकिन वहां पर कॉस्ट तो कम हो गया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां पर कम हो गई। और 60 मिनट्स में गए तो ट्रेड थोड़ा और कम हो गया, तो कॉस्ट कम हो गया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर कम हो गई। तो 60 मिनट्स और 30 मिनट्स में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई प्लस
कॉस्ट भी कम हो गया बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स वर लेस। ओके, पर उसमें हमने क्या देखा कि इंट्राडे ट्रेड अगर करना है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम rather 30 और 60 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स और 60 मिनट्स में तो मोमेंटम खत्म ही हो जाता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे में जो भी मोमेंटम आता है वो 5 मिनट से लेके आधे घंटे 1 घंटे तक ही रहता है वो मोमेंटम। उसके बाद फेड आउट हो जाता है, थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स पिकिंग अप द मोमेंटम अगेन, right? So it is always better to, if you're doing intraday, then you should be trading 5 minutes or 15 minutes time frame. Now for Nifty, you should be choosing 5 minutes time frame, and for Bank Nifty, you should be looking at 15 minutes time frame. Now, if you are a positional trader, like if you are holding your trade for more than a day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, like that, then you can choose to have a strategy on 30 minutes or 60 minutes time frame. Then those time frames can be used. But if you are doing pure intraday trading, then 5 minutes and 15 minutes time frame should be considered. 15 minutes time frame for Bank Nifty and other stocks, whereas for Nifty, you can look to have 5 minutes intraday time frame. Okay, so let us move forward. Now we'll talk about few strategies on indexes. So one is a swing strategy. What do we mean by swing? Swing is like, see, you will never see a stock going continuous up. Okay, it will always have a swing. It will go up first, then it will correct, and after thereafter it will resume its momentum upwards. Okay, similarly, if the trend is downwards, it will go down, it will correct on the upside a little bit, and then it will start going down. After going further down, it will still correct on the upside, and then it will start going down again. So you will always see swings in stocks and indexes. So one strategy is you trade based on swing, and the other strategy is you look at 15 minutes time frame, and on 15 minutes, the first 15 minutes bar will be formed from 9:15 to 9:30. So you have to mark the first 15 minutes bars high and first 15 minutes bars low. For example, at 9:15 market starts, and let's say Nifty opened up at 10,300 until 9:30. Okay, it made a high of 10,350 and it made a low of 10,280. So 10,280 is the low and 10,350 is the high for 9:15 to 9:30 bar. Okay, so in the following candle during the day, if Nifty breaks above 10,350, then you should look for buying, and or if Nifty breaks below 10,280 level, you should look to sell. Okay, I will speak this in I will repeat this in Hindi. ये फर्स्ट 15 मिनट्स बार का जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जैसे निफ्टी का एग्जांपल लिया हमने, तो निफ्टी लेट से 9:15 को शुरू हुआ एट 10,300 और 9:30 तक चला ट्रेडिंग। तो 9:15 से लेके 9:30 तक उसने हाई बनाया 10,350 का और नीचे की तरफ लो बनाया 10,280 का। अभी ये हाई लो आप मार्क कर लीजिए कि चलो आज 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 फर्स्ट 15 मिनट्स पे ये हाई लो बना है। ओके, फिर ड्यूरिंग द डे जैसे जैसे दिन मतलब चलता है, अगर आपको दिखे कि निफ्टी ने ऊपर का लेवल 10,350 का लेवल ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो आपको बाय करना है। ओके, और लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, 10,280 का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा उस टाइम पे। और अगर वो नीचे की तरफ 10,280 को ब्रेक कर देता है तो आपको सेल करना है और आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 10,350 का। ओके, तो इस तरीके से आप फर्स्ट 15 मिनट्स का ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अभी यही चीज हम लोग चार्ट पर देखेंगे। सो जो मैंने आपको स्विंग स्ट्रैटेजी बताया, तो स्विंग स्ट्रैटेजी
मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लिया है मैंने. ओके, यू सी निफ्टी 50 चार्ट हियर. इसमें मैंने एक जिगजैग इंडिकेटर ड्रॉ किया है. ओके, जिगजैग इंडिकेटर है जिसमें मैंने क्लोज लाइन को इनपुट लिया है और उसका इनपुट है 0.3%. मतलब 0.3% नीचे या 0.3% ऊपर अगर मेरा क्लोज प्राइस होता है तो वो मुझे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाएगा. Right. So this zigzag indicator is available in mobile application also. So in our mobile application, open the chart, go in ad studies category. In ad study, you will have this indicator available. Plot it with the same input that I have chosen here. All right. So after you plot this indicator, this is the way it will plot. Here I have chosen 15 minutes intraday time frame for Nifty right now. Now what you have to do here is, from wherever you start, okay, you have to look how the swing is being formed. Okay, you must be aware of, you know, swing highs and swing lows. All right. So if I start from this point, okay, from here it went high and then it made a swing low here and then it made a high here. All right. So when it is making a high, at that point of time when it is going up, it should actually break your previous swing top. So while it is breaking a previous swing top, then you can look to buy that stock. So where did it break the previous swing top? If you look at this swing, this downward swing, the highest was this and the lowest was this. But from here, when it tries to go up, it actually broke this swing high. So you should be looking to buy at this point. And at that point of time, your stop loss would be this swing lows low. Your stop loss would be here and your buy point will be here, right? So if you have bought that day, you have not made profit. That day it went up by, you know, let's say you bought here somewhere, okay, at 9,940. From there it went up to 10,000, but it came down. Let's say you did not square off your trade over here, but it came down, but your stop loss is still intact. And if you're holding on to your trade, next day again it broke up this swing high and you entered into a trade. The trade which you entered over here is still intact and the swing is making, you know, tops and bottom, higher tops and bottoms. So it is still going up, the swing is not making lower bottoms and lower tops. Okay, here also it started making higher tops and higher bottoms. Here for the first time it made a lower top, okay, but it made a higher bottom, right? So it made a higher bottom, it's still going on. Here when we came today here, it made a lower top and broke this low. So this was the point where you should have exited your trade if you were long there. But if you're doing intraday, then you should get out right at that point, either on day end or by taking 50 points profit on the upside and just exiting your trade. If you look at today's market, it made a lower top, okay, because the first top was here and the second top it formed over here. Before that, it had made a bottom over here. When this bottom was broken at this point, we should have gone short in Nifty. So this was the point you should have shorted Nifty and squared it off at the end of the day. So you got somewhere around 150 points from this level up till end. Okay, so this is swing strategy. And if you're doing intraday trade, this is one trade that we got today in Nifty. This yesterday, when it broke this top over here, then we should have entered a long trade. So we entered a long trade somewhere around 10,380 and squared it up out here at day end with a profit. Okay, if you look here, okay, this was the top, right, and this was the bottom. So this top was broken out here. So this was somewhere around 230. So if you entered a long trade over here and at day end, your ideal stop loss would have been this. Okay, so this was not broken. So if you wanted to hold your trade, you could have held it and got out
yesterday. Otherwise, you could have exited your trade over here with a loss of 70 to 80 points. Now, if you look at this trade, this top was here, it was broken over here. And if you get into a trade, a long trade out here with a stop loss of this, you would have squared off your trade on the day end with a profit. Okay. If you look at this day, this was the top and this was the top, which got broken out here. You entered into a trade and got out with a profit on that day. Okay. So similarly, you have to work upon it. Now, if you look at this trade, okay, you got a long trade out here because this top was broken with a stop loss of this, and at the end you squared off your trade out here with a loss, right? So you have to do this kind of a trading on a swing top breakout and swing low breakout. So this is a zigzag indicator which you can follow for your intraday trading or positional trading. Okay. तो ये zigzag indicator को हम लोग यूज कर सकते हैं. दिस इज अ zigzag indicator. सो zigzag indicator का जो इनपुट मैंने लिया है, इनपुट मैंने क्लोज लाइन लिया है with 0.3% रिवर्सल. 0.3% रिवर्सल है इसके अंदर, और ये 15 मिनट का चार्ट है. दिस इज 15 मिनट्स चार्ट ऑन निफ्टी 50. ओके, निफ्टी 50. We can use this for delivery call as well. That's not a problem. Okay. So ये एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप पर भी आपको ये zigzag इंडिकेटर मिल जाएगा. आप उसको प्लॉट करके उसका स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम जब ब्रेक हो तो आप लॉन्ग साइड में, शॉर्ट साइड में कॉल ले सकते हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी. Okay, if we are using it on 5 minutes, you just have to change the time frame. Rest everything will remain the same. Okay, you can use it on 5 minutes chart also on Nifty. But for Bank Nifty and other stocks, you should be looking at 15 minutes chart only. Okay, this is Bank Nifty chart that I have chosen. So today is the same setup that we have got. Yesterday also we have the same setup as we got in Nifty. So this day also, when this top was broken, you could have entered your trade and got out with a loss out here. Or else, I mean, if you entered your trade out here on a swing top breakout, your ideal stop loss would have been this. So either you could have holded your trade, or else you could have exited your trade based on intraday trading. So you can follow it on stocks or you can follow it on index. Okay, so this is zigzag indicator and you should trade it based on swing top and swing bottom breakout. Okay, let us now go ahead with other strategy called 15 minutes intraday, 15 minutes high-low breakout. Now, if you look at this Bank Nifty chart, this is 15 minutes chart, right? On this 15-minute chart, this is the first 15 minutes bar. Okay, this bar is of first 15 minutes from 9:15 to 9:30. So if you look at the right hand side, you have the high low figures. So I'm looking at Nifty Bank spot right now. So the spot high is 22,479.55 and the low is 22,281. So as soon as this 281 was taken out in the next bar, we could have shorted Bank Nifty with a stop loss of this high, which is 22,479. Okay, and hold that strategy till day end, till your stop loss is hit. Now, using this swing strategy, when you have shorted here, okay, it's going down. From here, it retraced upside, right? And then it started going down again. Now you can look to shift your stop loss from this level to this swing high. Okay, you can always look at shifting your stop losses if your trade is going in your favor. So up till this point, your trade was going in your favor.
So at that time you could have shifted your stop loss from this point to this point, but when it broke this swing low, you also would have shifted from here to here. Okay, and you have earned a good profit in Bank Nifty using this strategy, 15 minutes high low breakout strategy. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लो रिकॉर्ड करते हैं. तो अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको वैल्यू दिखा रहा है, ये फर्स्ट 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का बार है. तो बैंक निफ्टी का है 22,479 का हाई लगा है और 22,281 का लो लगा है. तो जैसे ही इसने नेक्स्ट बार में लो तोड़ा, यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रेड लिया, और जब हमने शॉर्ट ट्रेड लिया इसमें तो ये नीचे गया. अब जब ये नीचे गया तो ये जो हमने स्विंग ड्रॉ किया है, इसने ये स्विंग टॉप बनाया हुआ है, राइट. ओके, ये जब नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से जब आपने ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस तो ये था 22,479, लेकिन जब ट्रेड आपके फेवर में गया नीचे और ये स्विंग हाई बन गया तो आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर ले आइए. ओके, एंड देन व्हेन दिस वेंट डाउन फर्दर आफ्टर गोइंग अप, नाउ your stop loss can be shifted from this level to this swing high level, and you held on to this trade till day end, and you got a good profit out of it. कल के दिन का अगर देखें तो कल के दिन का फर्स्ट 15 मिनट्स का बार आपका ये है. ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स का अगर हाई आप देखेंगे तो हाई क्या है इसका 29,957 और लो है 21,772. तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसका लो टूटा थर्ड बार पे. जब लो टूटा तो आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस ये था, लेकिन शॉर्ट किया, लेकिन ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, ये उल्टा करेक्ट होके ये ऊपर जाने लगा. एंड देन व्हेन दिस योर स्टॉप लॉस वाज ब्रोकन हियर, यू रिवर्स्ड योर ट्रेड. आपने शॉर्ट को काट के फिर लॉन्ग कर दिया. अब जब लॉन्ग कर दिया यहाँ पर तो ये ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा. जो भी लॉस आपको हुआ था वो लॉस रिकवर करके उसने आपको उस दिन प्रॉफिट दिया. ठीक है, और फिर उसके एक दिन पहले का देखें, उसके एक दिन पहले का देखें तो यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट्स का बार है, तो ये उसका हाई लगा, तो सब सेकेंड बार में ही उसका हाई टूट गया. आपने लॉन्ग ट्रेड लिया, फिर जाके ये ऊपर गया इतना, लेकिन आपने अगर डे एंड में निकाला तो यहाँ पर निकला, मतलब प्रॉफिट में ही निकला, और अगर यहाँ पर निकाला तो और अच्छा प्रॉफिट मिल जाए. लेकिन अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते हैं. स्टॉप लॉस ही फॉलो, अगर स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो ही निकालिए, या तो डे एंड में ही निकालिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है. बिकॉज यू कैनॉट प्रेडिक्ट आउट हियर कि ये टॉप बन गया बैंक निफ्टी का. ओके, ऑल्सो अगर आपको 100-200 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर तो आप सोचेंगे अरे इतना पॉइंट मिल रहा है, अभी हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रेड में आप और पोटेंशियल है कि और 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है. तो ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस कि नेवर मिस आउट ऑन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड. इफ द ट्रेड इज प्रॉफिटेबल, रन थ्रू दैट ट्रेड. You should cut your loss making trade. Always have a practice of cutting your loss making trades and riding the profitable trades till the time it is on. Okay, इस दिन भी अगर आप देखेंगे तो इस दिन सबसे पहले लो टूटा, ओके, लेकिन फिर उसके बाद हाई भी टूट गया, तो आपका जो शॉर्ट ट्रेड था वो लॉस में चला गया, लेकिन जो लॉन्ग ट्रेड मिला आपको वो प्रॉफिट मिल गया उसमें. ओके, तो ऐसे करके आप अगर सिस्टमैटिकली ट्रेड करेंगे तो आपको डे एंड में प्रॉफिट ही मिलेगा. अभी इसमें देखिए, इसमें पहले अगर आपने शॉर्ट लिया तो यहाँ पर जैसे ही इसका हाई टूटा आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला. उस दिन इसका हाई कितना था 2188 एंड इट वेंट अप टू 2936. Okay, so that is why I'm telling you should always ride your profit making trade. Okay, because अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो और ऊपर जा सकता है. ओके, और अगर ट्रेंड वीक है तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा और आपको निकल जाना है और रिवर्स साइड में ट्रेड ले लेना है. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, 15 minutes high low breakout. Okay, so with this I end my webinar out here. So guys, you will get the recordings of this webinar. You can look at it again.